Hello everyone. Hope I am audible to you. I think yes. If I am audible, please ping yes in the comments, guys. Good evening, all. Good evening. Good evening, guys. And this is day eight. This is day eight for learn C++, which is started from very big basics, and now we are moving forward to very advanced. Okay, guys. Yesterday we had learned about function loops, and today also we are going to cover some of the concept from oops, some of the concept of functions. Are you guys excited for this? Yes, I am too. So, without wasting any time, let's start with today's topic. Guys, please ask your doubts in the comment section. I am presenting my screen in a minute, so please feel free to ask till I share my screen and continue with today's topic. Okay. So, I think guys, those who have any doubt, they can ask in the comments. They can ask in the comments if anyone have any doubts. And guys, we are in today or tomorrow, till today end of the day or tomorrow in the morning, we're going to share the video of the assignment which we have given to you. If you have submitted, that's great. If you have not, so you can take the help of that video to do that particular assignment. So I think so. We are good to go, and let's start the today's topic. Debisong, Yes. will you present your? Okay, great. No problem. There's doubts about template and pointers. Okay. तो एक Okay. टेम्पलेट के बारे में डाउट आया था, तो हम वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द टेम्पलेट टॉपिक ओनली, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट. तो मेमोरी लीक क्या होता है, कहाँ यूज होता है? यार मेमोरी लीक कहाँ यूज नहीं होता. मेमोरी लीक इज अ थिंग दैट शुड बी अवॉइडेड. तो मेमोरी लीक क्या है उसके लिए एक बार आप प्रीवियस वीडियो देखना जिससे मैं बता रखा है. एंड इफ यू आर फेसिंग एनी इश्यूज फर्दर, वैसे मैं एक बेसिक इंट्रो देता हूँ व्हाट इज मेमोरी लीक. तो जो मेमोरी लीक क्या होता है हमारा, कि जैसे मेरा एक वो है, लेट अस से एक पॉइंटर है मेरा, एंड इट इज नाउ अनयूज. ये मेरे को, हाँ, एक मेरा कोड है, ये मेरा पॉइंटर था, एंड दिस वाज माय कोड, दिस वाज द लेंथ ऑफ माय कोड. ये पॉइंटर मेरा इतनी ही जगह में यूजर है, एंड इट हैज allocated 100 MB of my memory. तो आफ्टर दिस द 100 MB मेमोरी, ये मेरी इतने में यूज होनी है, बट मेरा पॉइंटर यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये मेरी मेमोरी लीक होगी बिकॉज माई 100 MB इज नॉट फ्रीड. तो इट इज टर्म्ड एज मेमोरी लीक. तो इसके बाद मेरे को यहाँ पे फ्री कर देना चाहिए. ठीक है, ये तो हो गया हमारा मेमोरी लीक का कॉन्सेप्ट. अब फंक्शन टेम्पलेट से बात करते हैं. तो अब हमारा टेम्पलेट क्या था कि हमारा मल्टीपल डाटा टाइप थे जो हमारे रन टाइम पे. अभी मैंने क्या किया, एक टी डाटा टाइप बना दिया, और मैंने टी की सारी चीजें डिक्लेयर कर दी, टी, टी ए, टी बी. तो फंक्शन टेम्पलेट क्या करता है, रन टाइम पे इस चीज की कौन कौन से डाटा टाइप की रिक्वायरमेंट है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इट ऑटोमेटिकली एलोकेट्स द डाटा टाइप. तो टेम्पलेट क्या करता है, हमको रन टाइम पे डाटा टाइप देता है. यस. वी, हाँ, आज हम वो भी बात करने वाले हैं कि हम एक सिंगल फंक्शन को ओवरलोड कैसे कर सकते हैं. तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट एज वेल. अब एक चीज बताता हूँ कि हमने एक फंक्शन ओवरलोडिंग वाली चीजें पढ़ी थी. दिस वाज द कॉन्सेप्ट व्हिच वाज टॉट यस्टरडे, फंक्शन ओवरलोडिंग. तो सिंगल फंक्शन को भी ओवरलोड करके देख ही लेते हैं. तो अब हम फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए ना थोड़ा सा एक ना टॉपिक में जाते हैं. ओके, एक स्टेट का भी फोल्डर बना लेते हैं. तो हमने एक चीज देखी, फंक्शन. तो अब मैंने क्या किया, एक फाइल बनी. Guys, can you wait a minute? Let me. Okay. It is fine.
my screen visible? The code is visible now, or I need to zoom in a bit? And हम क्या करें, फंक्शन डिफाइन करें ऐड का, and a equal to 2 and b equal to 3 and c equal to 4. ओके, जूम मैंने कर लिया वैसे। अब हम क्या करते हैं, सिंगल फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया एंड ऐड। अब इस ऐड के अंदर मेरे को एक सिंगल फंक्शन में ही 2 ऑपरेटर्स के साथ भी काम करवाना है, 3 ऑपरेटर्स के साथ भी काम करवाना है। तो एक चीज तो और है कि अब इसको हम कैसे काम करवाएंगे। तो अब हम काम कैसे करवाएंगे, लेट अस नाउ थिंक। मैंने क्या किया, इंट n1 दे दिया, देन आई एम प्रोवाइडिंग अनदर वैल्यू इंट n2। अब मेरे को पता है कि एडिशन मेरी एट लिस्ट 2 ऑपरेटर्स के साथ तो होगी ही होगी, 2 पैरामीटर्स तो मेरे को चाहिए, क्योंकि बट सिंगल पैरामीटर्स तो ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। देन व्हाट आई विल डू, आई विल आल्सो डिफाइन अ थर्ड पैरामीटर एंड इंट n3 and I will initialize it as 0। तो अब इस int n3 इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा कि मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू इसको पहले से ही दे दी है। अगर कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की जाती है, if none of the value is provided, so it will automatically, okay, I have to put comma, तो ये ऑटोमेटिकली n3 की वैल्यू 0 कर देगा। and further I can provide value int n4 equal to 0। और जब मैं डिफॉल्ट वैल्यूज दे सकता हूँ ना, कंसिडर इट कि ये राइट से लेफ्ट ही दे सकता हूँ डिफॉल्ट वैल्यूज। डिफॉल्ट वैल्यूज लेफ्ट टू राइट हम नहीं दे सकते, डिफॉल्ट वैल्यूज कैन ओनली बी गिवन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो अब हमने राइट टू लेफ्ट एक डिफॉल्ट वैल्यूज दे दिया हमने, और हमने क्या किया, रिटर्न n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। ठीक है, लेट अस कॉल ऐड फंक्शन नाउ। तो हम क्या करें, सी आउट ऐड एंड a कॉमा b, ये कॉल किया और एनएल भी कर दिया। Now see out add a comma b comma c, and then I am giving handle and see out add of a comma b comma c comma d. Let me also define another value d. Is equal to 5. So let us run our program and see कि आउटपुट क्या आ रहा है हमारा, क्या ये काम कर भी रहा है। देखो 5, 9 and 14 is output, 2 plus 3 is 5 and 5 plus 4 is 9 and 9 plus 5 is 14। तो हमारा आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रहा है एंड वी हैव डिफाइंड ओनली सिंगल फंक्शन, और हमने सिंगल फंक्शन को ओवरलोड भी कर दिया बिकॉज वी आर कॉलिंग इट विद डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब इसी चीज को अगर मैं बोलूँ कि द फंक्शन शुड स्केल इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइडेड, कि अगर मैं सिंगल आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करूँ तो इट शुड एक्सेप्ट सिंगल आर्ग्यूमेंट, अगर मैं 2 प्रोवाइड करूँ तो ये 2 एक्सेप्ट कर दे, अगर ऐसे मैं 95 एलिमेंट्स प्रोवाइड करूँ तो इट शुड एक्सेप्ट 95 आर्ग्यूमेंट। तो इस चीज को कैसे करेंगे, आज इस चीज के बारे में होमवर्क है, इस चीज को देख के आना, गूगल करना, यू कैन इजीली फाइंड इट ऑन गूगल कि हाउ टू एक्सेप्ट वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स इन अ फंक्शन, और ये सारी की सारी चीजें इजीली हो जाएंगी, इजीली पॉसिबल है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब थोड़ा आगे आते हैं। अब हमने आर्ग्यूमेंट पास करे थे अपने फंक्शन में, तो आर्ग्यूमेंट हमने हमने अभी तक जो भी चीज की थी, हमने बाय वैल्यू आर्ग्यूमेंट पास किए, वी आर पासिंग एवरीथिंग बाय वैल्यू। अब बाय वैल्यू में क्या होता है कि हमारे वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर कॉपी हो जाती है, कॉपी होती है, दे आर, तो वो कॉपी होती है तो वो दूसरी जगह पे, मतलब एक ये थी जगह, अब उसने क्या किया, ये एक्चुअल थी हमारी,
फिर जब हमने पैरामीटर पास किए तो ये पैरामीटर बन गई। जो चेंजेस होते हैं दे आर चेंज ऑन द पैरामीटर, तो एक्चुअल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। और इसके अंदर तो एक्चुअल पैरामीटर मॉडिफाइड नहीं होता और कॉपी बन जाती है, ठीक है। अब पास बाय एड्रेस क्या होता है सर? अब इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं अबाउट द पास बाय एड्रेस। तो इसके अंदर क्या होता है हमारा कि इस पॉइंट इसी का एक पॉइंटर पास हो जाता है, बाय पॉइंटर पास हो जाता है, और तो वो इसी को पॉइंट करेगा। तो जो एक्चुअल एड्रेस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर आपका, ठीक है, एड्रेस पास होगा इसका, ये पैरामीटर पास नहीं होगा। और इसके अंदर चेंज रिफ्लेक्ट होंगे एक्चुअल पैरामीटर्स में, क्योंकि जो एड्रेस के थ्रू आके चेंज होंगे वो तो एक्चुअल डाटा में चेंज होंगे ना। और एक पास बाय रेफरेंस होता है। पास बाय रेफरेंस में क्या होता है, इसके अंदर हमने एड्रेस पास किया ऑफ एक्चुअल पैरामीटर, बट इन पास बाय रेफरेंस हम ये एक्चुअल पैरामीटर ही पास करते हैं, वी आर नॉट पासिंग द एड्रेस। और एक चीज और कि जब हम पास बाय पॉइंटर करते हैं तो एक्स्ट्रा मेमोरी इज एलोकेटेड टू द पॉइंटर पॉइंटिंग टू इट। अब ये पॉइंटर को भी तो कुछ ना कुछ मेमोरी देनी पड़ेगी, बट व्हेन वी आर पासिंग बाय रेफरेंस तो हम, क्योंकि हम एक्चुअल इसी मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं, तो हमको कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत नहीं होती। इस चीज को कोडिंग में भी देखते हैं कि अब इसको कोड कैसे करते हैं। एंड आई थिंक अभी तक किसी को कोई क्वेरीज भी नहीं है। इफ समवन इज फेसिंग एनी ऑफ द क्वेरीज तो वो क्वेरीज पूछ सकता है इन द कमेंट सेक्शन। हाउ डज द कंप्यूटर कंपाइल द डिफरेंशिएट बिटवीन ओरिजिनल वैल्यू एंड कॉपी ऑफ द वैल्यू, एंड हाउ डज इट एक्चुअली, वो कंप्यूटर तो डिफाइन कर ही नहीं पाता। कंप्यूटर कैन नेवर अंडरस्टैंड कि वो एक्चुअल वैल्यू है कि क्या है। कंप्यूटर तो एड्रेस पास करते हैं, कंप्यूटर तो उस एड्रेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो कंप्यूटर को ये पता ही नहीं कि वो एक्चुअल वैल्यू है। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हमें पता होता है कि वो उसी एड्रेस पे काम हुआ या इट इज परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑन सम ऑफ द सेपरेट एड्रेस। Can we give default value for function? Yes, we can give default value for function in C as well. I think Divyasom has even answered your question, Mansi. We can give a default value for function in C. Now, let us proceed to the coding part. Let me create a new file. So, on separate address, it stores the, yes, on separate address, it stores the same value. It creates a copy of the value. Even if you pass an array, so it will create the copy of the whole array rather than directly accessing the array. So it will create a copy. You are completely right. अब थोड़ा आगे देखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने ना 2 नंबर इनपुट करवाए यूजर से और आई हैव क्रिएटेड अ फंक्शन टू स्वैप द 2 नंबर, ठीक है। अब स्वैप 2 नंबर करना बहुत इजी सी चीज़ है। तो मैंने क्या किया, इंट एक टेम्प ले लिया। तो जो भी हमारी एनुअल की वैल्यू थी उसको हमने टेम्प में स्टोर करवा दिया। जो भी n2 की वैल्यू थी उसको हमने n1 में स्टोर करवा दिया। जो हमारी n2 में वैल्यू थी दैट इज 10। आई थिंक इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमने अभी क्या किया, हमने स्वैप करवाया, क्या कुछ नहीं किया। अब हमने 2 वैल्यूज को स्वैप करवा दिया, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ इंट a कॉमा b। चलो मैं स्पेसिफाई भी कर देता हूँ कि स्टेप कौन सा है। और मैंने a इक्वल टू 2 कॉमा b इक्वल टू 3, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक फंक्शन को खोल के स्वैप, ऐसे मैंने क्या करा, a और b को स्वैप कर दिया। एंड मैंने फंक्शन के अंदर भी c और u t n1 कॉमा n2
अब मेरे को पता चल जाएगा कि ये जो n1 n2 की वैल्यू आई है दैट इज फ्रॉम द फंक्शन। ठीक है, और अब मैं a और 2 b की वैल्यू इधर प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट द सेम लाइक। ठीक है, और इससे पहले तो अभी क्या था कि हमने एक फंक्शन के अंदर पहले प्रिंट करवाई और हम मेन में भी यही चीज कर रहे हैं, लेट अस सी। और जो एक क्वेरी आ रही थी वो क्वेरी भी मैं अभी आंसर करता हूँ, एक सेकंड रुको। ठीक है, लेट अस सी कि अब हमारे प्रोग्राम में हो क्या रहा है, कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन आवर प्रोग्राम। ओके ओके, मैंने स्टेप बाय वाले इधर भी नहीं लिखा है, बड़ा अच्छा वो आया। बिल्कुल बिल्कुल। यस दीक्षांत, थैंक यू फॉर योर हेल्प। मैं भूल गया था इसको चेंज करना। तो भी फंक्शन से पहले ए और बी की वैल्यू क्या थी मेन फंक्शन में, 2 एंड 3। तो फंक्शन में गई, फंक्शन में जाने के बाद इसकी वैल्यू 2 और 3 गई। फिर फंक्शन में आफ्टर प्रोसेसिंग इट्स वैल्यू बिकम 3 एंड 2, बट व्हेन आई केम बैक टू मेन तो वैल्यू वापस से 2 एंड 3 चेंज हो गई, 3 एंड 2 नहीं रही वहां पे। व्हाई वाज इट सो? क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर वैल्यू पास की थी एंड इट क्रिएटेड अ कॉपी ऑफ द वैल्यू, और वो उस कॉपी पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था रेदर देन परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन द सेम वैल्यू। ठीक है, अब इसी चीज को हम कॉल बाय रेफरेंस करते हैं, और हम इसमें क्या करते हैं, Let me- ठीक है, और आई हैव चेंज टू एड्रेस ऑफ n1 एंड एड्रेस ऑफ n2। तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ कि हमने एक एड्रेस पास कर दिया है और हम इसके ऊपर बाय ऑपरेशन परफॉर्म करें, सेम टू सेम ऑपरेशन परफॉर्म करें, और एंड व्हाइल पासिंग द वैल्यूज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कॉलिंग ओनली द स्वैप बाय वैल्यू। मैंने इसे चेंज कर दिया, स्वैप बाय रेफरेंस। लेट अस सी व्हाट विल बी द आउटपुट हियर। अब इसके अंदर आउटपुट क्या होगा, इसको देखते हैं हम। तो हमारा आउटपुट देखो एक छोटा सा चेंज हुआ है, ज्यादा चेंज नहीं है हमारे आउटपुट में। लेट अस सी व्हाट हैज चेंज इन आवर आउटपुट, और ये चेंज आया किस वजह से, क्या रीजन है इस चेंज का। तो अब हमारा पहले वाला जो हमारा फंक्शन चला दैट वाज लाइक कि 2 3 ही आया हमारा, यहाँ पे ये 2 3 ही आ गया फ्रॉम मेन आफ्टर इट, बट फ्रॉम मेन आफ्टर द फंक्शन विच वाज पास बाय रेफरेंस। तो यहाँ पे भी 3 और 2 ही है। तो वाइल 3 एंड 2 हेयर rather than being 2 and 3। अब इसको हम देखते हैं कि वो क्यों हुआ। तो लेट मी फर्स्ट क्लियर माय स्क्रीन एंड अब इसको मैं थोड़ा क्लियर करके एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ।
अब पास बाय एड्रेस जब हमने किया, जब हमने पास बाय रेफरेंस किया, तो हमारा क्या हुआ कि ये डाटा था हमारा, ये एक अलग से वो था जब हम पास बाय वैल्यू कर रहे थे सॉरी, तो इसकी एक कॉपी बन गई थी और ये कॉपी पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, तो सेम वैल्यू वाज नॉट हियर, बट व्हेन वी डिड इट बाय पास बाय रेफरेंस, तो इसने इसी डाटा को पास किया। लेट अस सी हियर, ये अभी जो डाटा पास हो रहा है हमारा, दैट इज ओनली दिस डाटा, हम इसी डाटा को पास कर रहे हैं डायरेक्टली, हम कोई एक दूसरी चीज वो नहीं कर रहे हैं, तो हमारा ये चेंज हो रहा है, तो हमने बाय इसको एज ए रेफरेंस पास कर दिया रेदर देन बाय पासिंग इट एज सिंपल थिंग, तो ये हमारा बाय रेफरेंस पास हो रहा है, हम इसका इसी पॉइंट का रेफरेंस पास कर रहे हैं एंड इट इज एक्सेप्टिंग द एड्रेस, ये एड्रेस एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसी एड्रेस पे सेम टू सेम ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस कि हमारा पास बाय रेफरेंस हो रहा है या पास बाय वैल्यू हो रहा है। Okay, cause passing the address or reference it makes the changes. Yes, Khushi, you are completely right. Because when we are passing the reference and we are passing the address, so it is changing the value at the same address only. अब हम क्या करते हैं, हम इसको पास बाय पॉइंटर या पास बाय एड्रेस वो भी बोलते हैं, पास बाय एड्रेस, दिस इज पास बाय रेफरेंस एंड देयर इज समथिंग डिफरेंट पास बाय एड्रेस, पास बाय एड्रेस को भी देखते हैं हम। इसके अंदर हम क्या करेंगे, वी विल यूज पॉइंटर्स टू एक्सेस द डाटा। तो पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एक दूसरा डाटा टाइप होता है जो उसी मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करता है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, टाइम इक्वल टू स्टार ऑफ n1, स्टार ऑफ n1 इक्वल टू n2, स्टार ऑफ n2 इज इक्वल टू 10, और अब मेरे को वैल्यूज प्रिंट करवानी है, तो आई विल यूज asterisk n1 and asterisk n2 here, similar case goes here। और इसके अंदर जब मेरे को वैल्यूज पास करनी होगी, व्हेन आई एम पासिंग द वैल्यूज इन स्वेप बाय एड्रेस, अभी इस कोड की तरफ इतना वो मत देना, लेट मी शो यू द डिफरेंस फर्स्ट, फिर कोड भी एक्सप्लेन करता हूँ पूरा का पूरा। No, pass by address and pass by reference does not mean the same. See, I will explain the difference between pass by value and pass by address and pass by reference as well. Okay, so here address of A and address of B will be, okay, let me finish some of the blank lines after it. ठीक है, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं हम। तब हमारी जो वैल्यू थी कि इसमें चेंज करनी हुई, why it is not changing, let me see, ENT to statement. Oh, the code is confusing, Varun. I understand that, so no need to worry. I will explain the code once again uh, by the starting itself. So no need to get confused about the code. Code is confusing, I know that. So here, and equal to star, and then star, and then equal to star, and two star, and two. Yes, this is the word subtract the star. Star, two, six, seven, nine, seven, address of 20. Okay. So I got that difference there.
अभी हमारा क्या हुआ कि लेट अस सी द आउटपुट। चलो लेट मी शो द आउटपुट वंस अगेन। तो अब हमारा क्या हुआ कि हमारे मेन में वैल्यू थी जो 2 एंड 3 थी। ये हमारा पास बाय वैल्यू। अब समझना कि मैं पास बाय वैल्यू और बाकी सब में क्या क्या डिफरेंस बता रहा हूँ, तो अभी डिफरेंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी पास बाय वैल्यू था मेरा 2 और 3 वैल्यू पास हुई, वो 2 और 3 ही फंक्शन के अंदर गई। फंक्शन चेंज करी, फंक्शन has swapped them to 3 and 2, but after it came to main function it became 2 and 3 only, ठीक है। अब हम मेन फंक्शन में वापस आए। मेन फंक्शन में तो वैल्यू ये 2 एंड 3 ही थी, तो मेन फंक्शन ने 2 एंड 3 वैल्यू उठाई। फिर मेन फंक्शन से फंक्शन के अंदर गई, फंक्शन हैज एक्सेप्टेड 2 एंड 3 वैल्यू, इट हैज स्वैप्ड द वैल्यू इनसाइड द फंक्शन 3 एंड 2, और बाहर आने के बाद वैल्यू 3 एंड 2 रही। तो ये था हमारा पास बाय रेफरेंस। अब पास बाय रेफरेंस में हमारा क्या हुआ, और ये 3 एंड 2 हो रही, तो मतलब वैल्यू एक्चुअल पैरामीटर में चेंज हो गई है, ठीक है। अब हमारा पास बाय एड्रेस है, क्योंकि ये फंक्शन पहले से वैल्यू चेंज कर चुका था 3 एंड 2 पे, तो हमारी मेन फंक्शन में जो वैल्यू गई वो 3 एंड 2 थी। अब हमारे फंक्शन के पास भी जो वैल्यू गई वो 3 एंड 2 गई। फिर हमारे फंक्शन के अंदर जो वैल्यू हुई स्वैप होने के बाद दैट वाज 2 एंड 3, एंड इन द मेन फंक्शन 2 एंड 3 वाज आल्सो रिफ्लेक्टेड। तो अब आप बोलेंगे कि पास बाय एड्रेस एंड पास बाय रेफरेंस में डिफरेंस ही क्या है। पास बाय एड्रेस एंड पास बाय रेफरेंस आर सेम, पर ऐसा नहीं है कि पास बाय एड्रेस और पास बाय रेफरेंस सेम है, दे आर डिफरेंट। नाउ लेट अस सी कि हाउ दे आर डिफरेंट। कि अब जो हमारा पास बाय रेफरेंस था, तो मेरा ये वैल्यू थी, ठीक है। तो दिस वैल्यू वाज पास्ड एज ए आर्ग्यूमेंट, बट इसमें हमारा पास बाय एड्रेस में क्या हुआ, एक पॉइंटर था, देयर वाज अ पॉइंटर व्हिच वाज पॉइंटिंग टू दिस, and this pointer was passed as a this argument in the parameter in the function. So pass by reference or pass by address, there is a minute difference between pass by reference and pass by address. In pass by address, we are passing a pointer to the memory location. In pass by reference, we are actually passing the reference of the current variable. We are not passing the pointer to the pointer to the variable. So this is the major difference between pass by value and pass by reference. और अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आई एम प्रेजेंटिंग माय कोड, एक बार अपने डाउट पूछ लो इन द Q&A सेशन। ये कोड था, लेट मी जूम इट आउट अ लिटिल बिट सो दैट इट इज क्लियरली विजिबल टू यू। Yes, please do like, share and subscribe our channel as well in the time duration. तो अगर अभी तक इस चीज में किसी को डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क कि हमारा ये हो क्या रहा है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, कि स्वैप बाय रेफरेंस क्या हो रहा है, स्वैप बाय एड्रेस क्या हो रहा है, स्वैप बाय वैल्यू क्या हो रहा है। प्लीज प्लीज फील फ्री टू आस्क योर डाउट। Okay, well, from next time I will make a section before it so that it is more clear to you. This is function overloading in which we are just changing the parameters. No, this is not function overloading. This is passing the values into our function. So passing the values can also take place with the help of different of the parameters. So passing a value or function overloading make difference. There is a difference. Okay, so I think this is clear to everyone. Now let us proceed to the next topic as well. अब जैसे हमारे पासिंग आर्ग्यूमेंट थे वैसे हमारे रिटर्निंग आर्ग्यूमेंट भी होते हैं। रिटर्न बाय वैल्यू होता है हमारा, और रिटर्न बाय एड्रेस होता है, और रिटर्न बाय रेफरेंस होता है। आई थिंक अब मेरे को इसको समझाने की आपको कोई ज़रूरत है नहीं। रिटर्न बाय वैल्यू क्या करेगा, इट रिटर्न्स द वैल्यू जो हम अभी तक कर रहे थे। रिटर्न बाय एड्रेस क्या किया, रिटर्न बाय एड्रेस वाज ऑटोमेटिकली डन जब हमने क्या किया, उसके एक पॉइंटर पास किया बिकॉज एक्चुअल वैल्यू वाज चेंज। तो रिटर्न बाय एड्रेस वाज ऑटोमेटिकली डन। और रिटर्न बाय एड्रेस के अंदर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप अपने एक हीप मेमोरी को भी आप रिटर्न कर सकते हो यूजिंग रिटर्न बाय एड्रेस। तो एक बार हीप मेमोरी को कैसे रिटर्न करते हैं, लेट अस आल्सो सी दैट।
अब मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, मेरे को एक फंक्शन बनाना है और उस फंक्शन में मेरे को क्या करना है, आई हैव टू टेक एन इनपुट फ्रॉम द यूजर अबाउट द साइज ऑफ एन एरे, आई हैव टू क्रिएट अ डायनामिक एरे एंड आई हैव टू रिटर्न द डायनामिक एरे। तो हम उसको कैसे करेंगे? लगा दूं मैंने n एंड आई हैव टू क्रिएट अ डायनामिक एरे ऑफ साइज n यूजिंग अ फंक्शन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया। तो आपको सभी को पता होगा कि एरे एक पॉइंटर के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, सो वी आर रिटर्निंग अ पॉइंटर आउट ऑफ द एरे, और इसीलिए हम इसको रिटर्न बाय एड्रेस भी बोल रहे हैं, क्योंकि एड्रेस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इंटीजर स्टार रिटर्न कर दिया मैंने, और एक मैंने बना दिया एलोकेट एरे के नाम से फंक्शन बना दिया, और मैंने int n को एज एन आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर लिया। ओके ओके, आई एम इंक्रीजिंग टेक्स्ट साइज अ बिट, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। आई थिंक नाउ द टेक्स्ट विल बी क्लियरली विजिबल। अब मैंने एक एलोकेट एरे का फंक्शन बना दिया एंड आई एम क्रिएटिंग एन पॉइंटर, एंड व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम एलोकेटिंग एन न्यू एरे। आई थिंक इस सिंटैक्स में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमने क्या किया कि हमने एक इस एरे को इनिशियलाइज भी कर दिया। हाउ विल आई इनिशियलाइज एन एरे? चलो इसको फॉर लूप से इनिशियलाइज कर देते हैं। फॉर एंड आई इक्वल टू 0 कॉमा आई लेस देन n कॉमा आई प्लस प्लस, एंड आई हैव एलोकेटेड द p ऑफ i टू बी 0। अब इनिशियलाइज करने के बहुत सारे और भी तरीके हैं, तो आई थिंक आप सबको सब तरीके पता ही हैं। और आई थिंक आई विल रिटर्न इंट रिटर्न p। अब मैंने p रिटर्न कर दिया, p वाज ऑलरेडी एन इंट स्टार टाइप ऑफ वेरिएबल, और मैंने p रिटर्न कर दिया। और इंट स्टार हम अपने पॉइंटर्स को बोलते हैं, एंड वी कैन यूज द पॉइंटर्स टू एक्सेस द एरे एलिमेंट। और अब मेरे को मेन में इसको एक्सेस करना है, तो व्हाट आई विल डू, इंट स्टार ptr इज इक्वल टू, अब मैंने एलोकेट मेमोरी फंक्शन बनाया था, एलोकेट एरे, और उसमें मैंने n को पास कर दिया। तो व्हाट इट विल डू, इट विल क्रिएट एन एरे, और ये एरे बनी है हीप मेमोरी में, क्योंकि जब भी आप न्यू से एलोकेट करते हैं, तो आपको पहले भी बताया था, ऑल द डाटा इज इनिशियलाइज्ड इनसाइड द हीप मेमोरी। ठीक है, तो ये हीप मेमोरी में ये डाटा क्रिएट हो गया, एंड इट इज रिटर्निंग अ पॉइंटर टू द हीप मेमोरी डाटा। तो हम हीप मेमोरी को एक्सेस करने के लिए भी रिटर्न बाय पॉइंटर यूज करते हैं। तो इट इज रिटर्निंग अ पॉइंटर और रिटर्न बाय एड्रेस। Yes, new operator is for dynamic memory allocation, and all the memory of the dynamic that is dynamically allocated is allocated inside the heap memory rather than the stack memory. So proceeding further to our topic, अब हमने ये कर दिया, और now the function is rejected and function का topic हो गया complete। अब एक छोटा सा टॉपिक और आता है स्कोपिंग का, एक स्कोपिंग का टॉपिक और देखते हैं, एंड देन लेट अस प्रोसीड विद द ऊप्स कॉन्सेप्ट व्हिच वर लेफ्ट एज ऑफ नाउ। अब हमारा स्कोपिंग का टॉपिक है, ठीक है। एक मैंने इसको तो हम कोड से इस तरह से समझेंगे। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम अभी तक हमने जितने भी वेरिएबल्स इनिशियलाइज किए हैं दैट वर ऑल इनसाइड द मेन, बट व्हाट इफ आई डिक्लेयर अ वेरिएबल हियर लाइक इंट x इक्वल टू 30। मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे जाके इनिशियलाइज कर दिया, तो कैन आई एक्सेस द वैल्यू इनसाइड दिस? पर चेक करते हैं सी आउट x, एंड लेट अस सी की इसका आउटपुट क्या आएगा।
ये आउटसाइड मेन डिक्लेयर्ड है, ठीक है। And let us print and handle and return to the array. So let us compile and run this program to see what is the output. Well, am I going a bit fast? I think I am going a bit fast. अगर किसी को थोड़ा फास्ट लग रहा हो या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। तो अब ये आउटसाइड मेन था और आउटसाइड मेन को इसने प्रिंट कर दिया। बट नाउ लेट अस चेंज समथिंग एंड हमने क्या किया, int x इक्वल टू 31, यानी यहाँ पे x इक्वल टू 31 इनिशियलाइज कर दिया। तो अब मेरा क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू 31 आ रही है बिकॉज आई हैव इनिशियलाइज्ड इट इन द ब्लॉक सिस्टम। अब जो हमारे ये कर्ली ब्रेसेस होते हैं, कर्ली ब्रेसेस हमारे ब्लॉक्स को मार्क करते हैं और जो भी हम लोग एक्सेस करेंगे वैल्यूज दैट विल बी एक्सेस फ्रॉम इनसाइड द ब्लॉक, ठीक है, कि इनसाइड द ब्लॉक वैल्यू एक्सेस करता है। अब मैं बोलता हूँ कि आपने यहाँ पे int x इक्वल टू 31 इनिशियलाइज कर दिया है और यहाँ पे x की वैल्यू आ भी गई, बट व्हाट इफ आई वांट टू एक्सेस दिस x, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो आई एम यूजिंग सी आउट, आउटसाइड मेन को हटा देता हूँ, वैल्यू से ही पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू एक्सेस हो रही है। एंड आई एम यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर x, ठीक है। अब हम क्या करा, अब नाउ लेट अस रन द, नो इट विल फर्स्ट टेक ग्लोबल वेरिएबल whereas in second time। अभी देखो ये 31 पहले था, 13 वैल्यू इज नाउ एक्सेसिबल। अब ये कैसे डिफरेंस है, बिकॉज हमने बता दिया कि जो वेरिएबल ग्लोबल स्कोप में प्रेजेंट है एक्सेस दैट वेरिएबल, तो हम वी हैव टू एक्सप्लिसिटली डिफाइन कि हमको ग्लोबल स्कोप वाले वेरिएबल को ही एक्सेस करना है। अब एक और इशू आता है कि अगर मान लो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया int x इक्वल टू 14, तो ये एरर दे देगा, बोल देगा x इज ऑलरेडी डिफाइंड। लेट अस कंपाइल आवर प्रोग्राम। तो इसने क्या बोल दिया, री डिक्लेरेशन फॉर x, क्योंकि हम सेम स्कोप के अंदर एक वैल्यू को दो बार इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमको री इनिशियलाइज करना था, तो हम एक अलग से एक सूडो ब्लॉक भी बना सकते हैं। दिस इज नथिंग बट एक सूडो ब्लॉक है, इसको हमने किसी फंक्शन में डाला, हमने एक सूडो ब्लॉक बना दिया और अब मैं x को री इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ। बट ये x इस ब्लॉक से बाहर आते ही खत्म हो जाएगा, को भी देखते हैं कि ब्लॉक से बाहर आते ही खत्म होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब ये ब्लॉक से बाहर आते ही खत्म हो जाएगा। सेम ब्लॉक इट विल clear its scope after the block is finished, and let us compile our program and see. So what is accessed here? X31 is being accessed here क्योंकि ये same block में है। Then it has entered another block, so it is accessing 14. After the completion of the block, it is accessing the variable in the same block, and then it is accessing the global variable because I have mentioned that the scope of the variable is global. तो ये हमारा काम हो रहा है, that this is the thing that is happening. और now let us proceed to further. और अब हमारा टास्क क्या है, अब now let us proceed to the task. अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस बनाए, जितना भी हमने काम किया, they are in the form of main. तो अभी टास्क यही है कि जितना भी हमने काम किया, let us change it to the function. And thank you for today कि अभी फंक्शंस कंप्लीट हो गया, पर oops का टॉपिक अभी आ रहा है। So I would like to invite Divyasam to start with the OOPS concept. Divyasam, can you share your screen and start with the OOPS concept for today? As the function concept for today is already finished. Yeah, so am I audible? Hello? Yes, Divyasam, your screen is visible and you are audible. Okay. So, guys, for the
I guess yesterday all of us were on the same page regarding OOPS. So guys, कल OOPS का कुछ concepts रह गया था, right? So today we are going to proceed with that and we'll do something interesting. Yesterday we just created this, simple sa implementation in OOPS, and I guess this was clear to everyone. Let me go back to the previous slide. And this is what we implemented yesterday. And let me quickly show you the code for that. Uh, Yesterday we did this much, right? Yesterday this is what we had completed. Basically, we had created a class animal, and then we started with, let me give you a quick overview about what a recap of what we had done yesterday, and then let's proceed with some cool topics for today. So, okay. So what Dibbisum, we did is, before you are yeah, starting, Dibbisum, before you are starting, hello, yeah. Kshitij, am I audible? Yeah, yes, you are. Yes, you are audible. Audible. You are audible. Hello. Hello. Yes, you're Karthik, you audible. are So, audible. You can speak. You are audible. Uh, Kshitij, am I audible? Divisam, you can continue. I will connect with Sarthak and please zoom in a bit. There is a comment from the team. So to zoom in a bit. okay. So, cool. So I guess now the code is visible to all of you. Uh, Okay, so guys, this is what we had done yesterday. Basically, this is the idea that we were trying to do. हमें एक animal class बनानी थी, right? And that class animal was going to have different objects: dog, cat, and cow. And let me give you a quick overview of what was the drawback of the simple method. So this was, this is the simple approach by using procedural-oriented programming. Like without OOPS, if we were trying to do this implementation of class animal, and we saw some of its drawbacks. Basically, देखो इसमें oops है नहीं. We cannot create our own data type. What we have to do is we have to use existing data types and somehow maintain the index, because जो dog है in different array, that same index is going to give us its height, that same index is going to give us its language, and somehow using arrays, by using these so-called jugards, we implemented this, this idea, this concept of class animal and different objects. Now here is the drawback. Other than the fact that this is difficult to manage, because right now it is working क्योंकि हमारे पास data कम है, so it's working fine. But if you look, this was the main drawback that we saw. We cannot precisely control the data flow. Just to print, the let's say the language of some particular animal. Let's say I want to print out the language of dog. So I just cannot pass index 0. I have to say where the array from where index 0 will give me the language. So I have to pass language, I have to pass animals, and I have to pass the index where the data is. So rather than, if I want to print the, Dibbisum, some data of sorry to dog. interrupt you. Sorry to interrupt you, buddy. This Okay. is a small announcement, guys. कि ना, from today we are going to consider only live attendance, as I can see कि ना बहुत जनों को doubts आ रहे हैं. ठीक है, जो सेशन नहीं देख रहे हैं उनके डाउट्स लेने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज दे डिडंट नो द बेसिक अगेन. ठीक है, एंड वो सेशन बिल्कुल नहीं देख रहे हैं. ठीक है, तो उनके लिए है ये चीज. जो सेशन देख रहे हैं उनको डाउट्स भी नहीं आ रहे होंगे, और उनको डाउट आ रहे हैं सॉल्व टू. ठीक है, एंड जो असाइनमेंट जिन्होंने सबमिट कर दिया है उनके अटेंडेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज भी नहीं है, कल भी नहीं है, परसों भी नहीं होगी. ठीक है guys? तो जो असाइनमेंट कर रहा है, जो साथ साथ काम कर रहा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आज से लेके 15 दिन तक. बट दोज आर नॉट डूइंग असाइनमेंट एज वेल एज नॉट अटेंडिंग द लाइव सेशन, सो फॉर देम वी आर वेरी सॉरी. ठीक है गाइस, तो है ना. तो थैंक यू दिब्यसम, यू कैन कंटिन्यू ना. Okay. Okay, so okay, I'll try to switch between English and Hindi. Um, so, guys, what I'm doing here is basically we kind of implemented that concept because this was pretty easy. This was not that, it's not that sophisticated structure.
it's a pretty simple structure, a class है, and there are different objects. Similarly, if we were to implement this structure, I could have created a an array car. Inside array, then I would have created multiple different arrays. Let's say array color, just in which I would have stored these colors, and I would have then maintained indexes such that index 0 of color would give me green, index 0 of brand would give me Ford. Similarly, and like that, kind of by using this very incapable approach, I would have implemented the concept that I want to do. But here's the other problem. Other than the fact that it's difficult to maintain, इसमें एक और problem है. If we want to print out the data or use the data of some particular object, let's say here, let's consider dog. If you want to access it and print out some of its values, let me maximize this, then I would actually have to pass it a copy of my entire database of all the objects, of all the different objects. And it can access, ethically it can print out just the data that is required, but it can also access other data, because if I just change the index, it will access every other value. And this was one of the drawbacks that we saw here. Okay, where was the drawback slide? We saw that this was okay. I think the drawback slide was right here. Yeah, this is the drawback slide. Most precisely, you can see in this example, we cannot precisely control the data flow. For example, this is the structure that we have implemented. There is one single database, and anything that wants to access it and print some value, we consider this example Netflix database. This is what the global database that we have. There are some contents that are globally available to everything. And now, if we create different objects, if we want, there are different objects because Netflix is available in Asia, it's available in Japan, it's available in UK, and all the other countries. So every country has some of its private content and some of the global content, which is provided by Netflix Global. So now, what happens if Netflix Asia wants to stream its shows or movies? Then it's going to need an entire copy of the global database. And the problem is some of the contents here might be restricted in some regions. Let's say Netflix Asia, as such, is restricted. It should not be available. Then, but even then, it's going to need the entire copy. And although we provide some conditions and then dissipate it to our viewers, but it is not sufficient because the entire data is being copied. Code में redundancy हो रही है. We are copying things. We are using more space and all that. So this was the problem. And this was the solution to the problem using object-oriented programming. We create an idea rather than creating a database. We create an idea, a blueprint, which itself cannot be used. Let me turn on my pointer. This Netflix core, this cannot be used. This is just a blueprint. Like before your house is built, a blueprint is made, and based on that idea, your house is built. Similarly, we have a Netflix core, which is just a blueprint. It has some blank values like location, private content, global context, policies. Basically, this is telling that if anything belongs to me, if anything is being created from my idea, then it should have these properties. And these properties in C++ are called attributes or class attributes. And based on that, we created different, Netflix streaming services, India, UK, Japan, and now they will only inherit the content which are globally possible, which are globally allowed to be streamed. Other than that, they will have their own private content, जो कोई और access नहीं कर सकता. So this was the basic idea that we can now control the data flow. And I know it's a bit confusing, but let's do that in the code and see how it's working for you. Any notes still here? So were you talking about the assignment which you gave the attendance form or the one? Yeah, exactly. The attendance which is given in the attendance form. So guys, what's happening now is we'll come to the data Netflix problem in a second. Let's just compare how object-oriented programming solved the animal that animal structure. So this was the poor approach that we did. We maintained different arrays and such, but this is how we did it with object-oriented programming. We created a class animal. We defined some attributes to it. Now these attributes,
Okay, it's not here. This attribute is exactly the ones जिसके लिए we were maintaining different arrays. Now we don't have to maintain arrays. Now we don't have to remember the silly indexes. What we have to do is inside class, we just gave it certain attributes. Here we are telling the compiler that if anything belongs to class animal, it has to have these properties. It has to have a name. It has to have a height. It has to have a language. And these were some constructors. We already know what are constructors. Constructors are special functions that do not even have a return type. And what they do is they initialize the data, the attributes of a class to some default value if you provide here, or you can initialize it with your manual values if you create a parameterized constructor. Then yesterday we also learned about this pointer. Basically, what this does is let's come to the main function. So in main function, when we were creating animal dog, now this class is just an idea. It is a concept. For example, let's say that there is an architect who made a blueprint for your house, and then the workers, based on that blueprint, उन्होंने आपका घर बना दिया. So architect ने एक blueprint बनाई, एक plan, एक drawing बनाया, and the workers on the basis of that drawing उन्होंने आपका घर बनाया. ठीक है? The architect अपना drawing बना के चला गया. He has done his job. So now you have an idea, and the workers built your house on that idea. Now the workers got some other contract. They built someone else's house, and they used the same idea. They used the same idea which the architect had done previously for your house. So the problem is, the architect has done its job, and made it given its plan. But now the problem is, the architect doesn't know who are using his drawing, his architecture, to create houses, and he doesn't care for that because he has done his job. His job is just giving a plan and a sketch of how the house should be. So similarly, we have a class here which is defining how everything that belongs should be. This is the plan. Now the class doesn't care who is using it to create objects. Like we use the class animal to create an object human. We use the class animal to create an object dog. But the class doesn't care who is using it. So to specifically tell the class that right now dog is going to use it, right now human is going to use it, we use this. This tells the class, so this keyword this. That I know that sounds weird, but this keyword is called this. So what this keyword does is it tells the compiler that currently dog is calling you. Because जब मैं ऐसे लिखता हूँ animal dog and I pass values, so inside the this operator automatically the value of dog is substituted. It is telling the class that dog is calling you right now, and whatever name when I say this arrow name, it means whatever you assign this value, assign it to the attribute of dog. Similarly, if human is calling it right now, then it will say assign this name as an attribute of human. So this is doing that. This is removing that ambiguity, which object is calling the class. It refers to the current object. So anyone is having any doubt till here? I know this was a bit complex. If there are no doubts, we'll proceed with access specifiers and inheritance. In between, cursor is lagging a bit. Okay, arrow operator. Okay, so Umang is asking why are we using arrow operator? Well, this is just for convenience. We are using arrow operator for convenience. Without arrow operator also you can do it, but you will have to write extra lines. So we know what are pointers, and this is nothing but a pointer. And what it is doing is, if I would have to use the normal pointer form, this is how I would have done. So this is a pointer. I dereferenced it by using the asterisk operator. That is what we normally do. We use an asterisk to fetch the value to which the pointer is pointing, the variable to which it is associated. Here, this operator is associated to object human or object dog, whatever you can assume, because both of them are accessing it. So let's say right now animal dog is calling it. So dog object, everything that is inside dog is right now inside this. It is managed by C++. This refers to the current object. And when I say asterisk operator before it, it means point to that dog object. And after that, I used the dot operator. That is how we normally print out the value of a object
Yesterday we learned that if I say human.name, it will print out the value of name which is present inside human object. So basically, instead of writing this much, C++ provides us a convenient way. Just use arrow. Both are similar. In that method, you have to use an asterisk, wrap it inside common brackets, and then use dot operator. So instead of doing that, this is the easier way, a convenient way. So that is all about arrow function. All clear, all clear. I think this code is quite related to inheritance. Now, till now we haven't implemented inheritance. Today we are going to. So this was, this example is simple. Here we do not need inheritance. So let's, first thing today that we're going to do is implement inheritance. But before that, let's study what our access specifies. Yesterday, everything, all the attributes that we have used was defined inside public. We said public and then we defined it. And since these values were public, inside main we could print it out. I could just say human.name, human.language, and that was working fine because everything here is public. Now, what if there is something that I don't want to share? For example, let's go to our illustration. This is what we are trying to implement, right? We had an animal class and there were different objects. Now, this might happen that अभी dog class का हम सब कुछ access कर सकते हैं, but what if this object has some secret data, some confidential data that it doesn't want to be accessed from outside? Only the class can access it, and it can only be accessed inside the class. No one else should be able to access it. So this is how you do. This is how you implement that functionality. So let's say every object here, these are living organisms, so they might have a dream, and dream is not something that you share with everyone. So you want to make sure that your dream is only accessible inside the class and not anywhere else. You want it to be secured. So I'll say private. Now, okay, sorry for that. And yeah, so I defined it private. And inside private, I will define a dream, string dream. And what I'll do here is during the parameters constructor, I'll say I'll take another extra value, string dream, because I want to initialize it. So I'll say dream, and inside the constructor, I'm going to do this. Dream is equal to the parameter that we have received. No big deal. We took a parameter and we assigned it to a value. And let's also do that in the default parameter. I mean, if some default constructor, if we are not given some specific value to be assigned, we will just assign it a default value, no dream. Okay, cool stuff. Nothing fancy here. Nothing fancy here. We just use the simple constructor method to initialize our variable, the attribute. And here the only catch is now the attribute is private. So screen is freezed. Okay, that's weird. Hello. Screen paused actually. Now I think it is working fine. Yeah, I think there is no internet issue from my side. Okay, you can continue with this one. हो गया. I think now it is fine, guys. ठीक है, fine. Okay, so guys, what's happening now is inside हम अभी हमने यहाँ पे constructor change कर दिया. Constructor के अंदर we have assigned an extra parameter. That's why yes, there is an error that no instance of constructor animal. So the first animal means class animal and the constructor inside that. So animal scope resolution operator animal matches the argument list. Basically, it telling that there is no matching function which accepts 3 parameters. So that is the reason that now the reason for that is we have assigned an extra parameter dream. So I'm going to give it a dream. Give me a bone. Okay. Now since this is a dog, its dream is give me a bone, and I've assigned it. Now let's do that here. Language, and I'm going to say I'm going to print that out. I dream of, and I say dog dot dream. Now you will see the problem. This is how we have been doing till now. Whenever we use the object,
Okay, this should have been here. Okay, cool. So this is how we have been doing till now. Whatever attribute or variable is defined inside class, we just use object dot attribute and use it. Object dot attribute and use it. Similarly, dream is also an attribute, although it is private, but it is still an attribute and it's defined inside class. So logically, we should be able to access it. But you will see, it's not possible. Sorry, I'm in a different folder. I'll go to day 7 because this was yesterday's, and g++.cpp. So you can see the code does not compile and there is an error. Dream, the variable dream is private, and that is how, guys, OOP concept allows you to secure your data. You can secure, selectively provide some data that is accessible from the main function, and at the same time you can hide something. And inside OOP there is a concept called, I guess, yeah. Dibbism, from Dibbism. Yeah. Your screen is again stuck. I don't know why it is happening, but it is happening. Can you see it? Okay, let me refresh once. Can you type something on your screen? Type something on your screen. Guys, give me a minute. I will call Dibbism. He's coming. I think he's refreshing the stream. Alright. Dibbism, now press your screen. Yeah. You're audible. Okay, so I presented my screen and I think it is. it isn't stuck now. Okay. Now you can continue. Write something on your screen. Write something. Okay, great. It is. Okay, it works. Okay. So I hope I'm not lagging right now. And sorry about that. I don't know why. Yeah. हाँ do one thing जो 10 मिनट पहले समझाता था दोबारा समझा दे ठीक है थोड़ा पहले से ले ले टॉपिक है ना ठीक है okay. So guys, basically this is what we are done. While this is what I had done while I was stuck. I don't know for what apparent reason, but so basically I defined animal class and उसके अंदर हमने एक attribute को private कर दिया था, as we had done private dream. And when I tried to print that out using the similar method that we have done yesterday, which was working fine, all the normal attributes were being printed, which was defined inside public scope. All these were public, but the dream was private. So right now, when I try to print dream, I got an error that the code doesn't even compile. Output is the letter thing, but the code doesn't even compile. It gives an error that dream is private. Dream of class animal is private and it cannot be accessed. So this is how this is what I was trying to explain in the slide. Most importantly, you have precise control over data flow. In Netflix Core, how we had some private content inside different, we had some private content inside different objects. Netflix India had some private content, Netflix Japan had some private content, and by OOPS, you can selectively allow some, some things to be accessible, some things can be kept private, and this is how you restrict or data flow. And this is one of the most precious advantage of object-oriented programming. And when you go into the theory of object-oriented programming, there are five of these basic concepts which are followed in OOPS. There are classes and objects. We know what are classes and objects. There is a concept called data abstraction, which means whatever sophisticated things are being done inside your class, all of those have a very simple, front end. It can be used very easily. Just for example, जैसे आप अपना TV remote use करते हो, अंदर बहुत सारी circuits हैं, but you only need to press a button. You don't need to know कि button press करने पे how the TV is responding to it. That idea is called data abstraction. And then there is an idea called data encapsulation. Data encapsulation says only selective data should be globally available, which can be accessed and displayed. Some data should be private and should not be visible outside.
that is in a nutshell what data encapsulation means. It basically means data hiding. Whichever data is confidential, hide it. So that is one of the key features of object-oriented programming, data encapsulation. And we just displayed how data encapsulation works. If it is private, it cannot be displayed. And with that being said, let's move on to a very quick topic, inheritance. So what I'm going to do here is, you know, okay, let's start with a simpler topic. What I'll do is inheritance. I'll remove the code. Okay. So guys, what's happening here is that, okay, before I start with inheritance, any doubts still here? From when you declared private. Okay, nice code. Nice code. Okay, thanks. Private access modifier is only accessed inside the same class. Yeah, exactly, Jyoti. Private access, if your data, if you declare an attribute private, it can be accessed only within the class. And there is another access specifier called, protected. And it is possible only in inheritance. So that is why we are doing inheritance right now, and we can see how protected access specifier works. Okay, I think everyone is clear with that. So let's start with inheritance. And I thought we would be implementing, this entire, where is the question section? I thought we could implement this entire Netflix course structure today, but let's move on to tomorrow because today we have, restricted time left. So we'll do with a simple example, and tomorrow we'll, implement this entire structure in C++ with OOPS concept. So what I'm going to do is, some basic stuff that needs to be done, traditional include bits and using namespace. And I'll say int mean and return 0. So this is the basic boilerplate that we need. And guys, if you remember the day that we started, OOPS concept, we discussed one thing, that as one of the most perks of using object-oriented programming, OOP makes it possible. Where is the pointer? OOP makes it possible to create fully reusable applications with less code. So till now we only know that this is one of the perks of using OOPS concept, but we have not used it. So let's actually check out if OOPS is giving us the power to write less code and achieve the implementation. So let's do that. So what I'm trying to do is, first of all, I'll create a class ape. Okay? I have a class ape. Inside that, I will declare some public attributes such as a boolean value, which will say tail exists. Basically, because ape have tails, right? So I'm declaring a public variable ape, tail exists. Next string variable declare karunga. I'll name it habitat, where I'll store the habitat where they live. And I'll as one of the other attributes, I will give them float height. So then what I'll do is I'll create a constructor, because it needs to be done. I mean, we need to initialize it. We have only declared them till now. We'll initialize our attributes. I'll say tail. Okay, guys, there's a fun fact that even if you do not, create a constructor, C++ automatically gives you a default constructor, which will, initialize your attributes with default values. So string will be initialized to empty quotes, float will be initialized to 0.0, and just like that, everything will have a reasonable default value. But we don't want, that default value of everything being empty. We'll create our own parameters constructor. So in the parameters constructor, I'll take habitat and I'll take height. Okay. Now inside height, other than that, I don't think tail exists is a question, because we already know that apes have tail. So what I'm going to do is I'll assign it a default value. Exists is equal to 2. It is already present. So उसको मैं input लूँगा ही नहीं. And the advantage of doing this is जब मैं main function say when I try to create an object, I don't need to give it 3 parameters. Instead, I only need to provide these 2. This will have its default value. So let's quickly give it some of its default values. I mean some of its assign it the parameter inputs, and I'll say height
is equal to the parameter height. Okay, why is that an error? Okay, cool, no problem. And other than that, एक छोटी सी इसमें method बना देते हैं. And guys, yesterday we can you tell a bit about default access modifier? At what extent it can be accessed? Okay, default means by default everything. Uh, Default as in it can be accessed within the same class or by friend functions. Currently we have not discussed friend functions. Friend functions is basically you declare a function inside as a friend and then you access it from outside. We'll study that in details very soon. For now, let's look at one more interesting concept of functions. Yesterday हमने class के अंदर एक function define किया था. हमने class के अंदर ही उसको define कर दिया था. What if you want to define it outside your class? So for that, you actually need to just declare it inside the class. For example, void, and I will name my function snacks. And just like that, मैं छोड़ दूंगा. मैं और कुछ नहीं करूँगा. Outside the class, I'll say the return type of the function, that is void. Now, guys, see here I've just declared it. जैसे variables declare करते हैं. Similarly, I've just declared it. Now, outside the class, I'm going to type its return type, and then I'm going to say that this function that I'm defining here belongs to class A. So I will say A and scope resolution operator, which tells that this function belongs to class A. And I will define snacks here. And inside snacks, I will say cout. I had of course, I can use this here because this function actually belongs to class, so it can also access this pointer. And I'll say this. Okay, we have not defined any attribute, so let's not use this here. And I'll say banana. Cool. So whenever this stacks function is called, it will print I had a banana because this belongs to class A. So this is just one of the techniques of how to define function outside class. And let's actually now look how C++ object-oriented programming is allowing us to write less code and implement our entire structure. Right now, my plan here is I will define a class A. Okay, I will define a class A, and then I also need a class human. Now we know that humans have come from apes, right? We all know everyone was monkey someday. Grandfather of grandfather and grandfather raised to the power something. Someone was ape, and we know that humans have evolved from apes. So if something belongs to class human, then it should have everything that belongs to an ape and then some extra functionalities. Like ape did not have so much common sense, and way of talking was not, their language was not so developed. But whatever the ape had, we also have that. So we need whatever these attributes are present inside ape, and other than that, we also want to implement some extra functionalities. Now, one way to do that, one way to implement class human is this is what we would have done without object-oriented programming. मैं इसको copy paste करता, मैं इसको नीचे फिर से लिखता, and मैं नाम change करता human. But this is not making sense because we are using the same code. This structure is already written for us. This blueprint is already defined. I know this blueprint is already defined for us. Then why do we need to copy paste it again? OOPS provides you a better concept. It's called inheritance. Using inheritance, we don't need to define these attributes again. The object will automatically have it. So I'll say class human, and then you use this colon. This colon tells that whatever follows now, this class is inheriting from it. So class human will inherit from class ape. And इससे होगा क्या? Basically, I'll show you a quick demo. I'll say public ape. So now inside class human, all of these attributes are already available. वो automatically compiler manage करेगा. C++ will handle that for you. All these attributes will be available inside any object of class human. And then other than that, you can also define some even more cool attributes other than the
the ones that is being provided by ape. So I'll define one extra attribute. I'll say IQ. I'll create a constructor for human, and I'll say एक input लूँगा id IQ. Other than that, for now, let's also take these inputs, and right now tail exists needs to be false because humans don't have tails. And guys, what I'm going to do here is, I'll do a very simple thing, that this IQ is equal to IQ, and I would I would need to manually set all of these values जैसे हमने पहले करा था. This habitat is equal to habitat, and guys, you might be thinking ki this is the constructor of class human, and how is it accessing habitat which was defined in class ape? Well, that is possible because class human is inheriting ape, so it can access everything that was present in the definition of ape. And just like that, I will not define everything. I just need to show you the redundancy that is happening now. Basically, ape के अंदर एक structure defined there which will assign these values for me. Then why am I defining it again? क्योंकि मेरे पास already एक structure है, मैं उसी को क्यों नहीं use कर लूँ? I will use this constructor which is present in defined inside ape, and other than that, अगर मुझे और कोई need मेरी extra variable है, उसको मैं यहाँ करूँगा. So oops will also provide you a quick way to do that. Within your constructor human, what you can do is, I'll just use this, this colon, and from this colon, I'll call the constructor of A, and इसके अंदर मैं ये सारी values pass कर दूँगा जो मुझे input में मिल रही थी, habitat and और क्या था, height, जो भी मैं input ले रहा था. And ये क्या करेगा, अगर मुझे manually define करने के बजाय already from class A using this architecture, मेरी ये values define हो जाएगी, and inside human मैं इन्हें भी define करूँगा. And guys, I took too much time today, so we'll continue with this code and understand oops tomorrow. So if you have any doubts till here, then bring in the chat. That's all from my side today, and we'll continue with inheritance tomorrow. There are different kinds of inheritance, multiple inheritance, multi-level. कल करेंगे, ठीक है? Can we use class variables in ape function? So guys, the attendance form is live in the description. You can go and fill the attendance form, guys. है ना? It will be open till next 10 minutes. So 10 मिनट के लिए open है. जाओ और fill कर दो. And I would like to मतलब दोबारा एक सरप्राइज है, मजेदार एक जैसे बोला था संडे को एक सेशन रखेंगे, ठीक है? उसमें मस्त मस्त स्पीकर्स को बुलाएंगे. दोबारा एक स्पीकर आ रहा है, दोज हू फ्रॉम रेडिट, नितिका मैम, ठीक है? Which is on Sunday again on 5 PM. ठीक है? We will talk about how to build your personal brand. ठीक है? Most of you are from first, second and third year, so you will get to know कि how to make your personal brand, how to enhance your CV, how to depict your ability, your skills into your CV or into your LinkedIn and all the social media platform which you are using. तो डू अटेंड दिस सेशन, बहुत अच्छे होने वाला है सेशन, है ना? अटेंडेंस फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके दे दो, वरना तो मुझे है ना, जिसको नहीं मिल रहा है तो डू वन थिंग, रिफ्रेश काइंडली रिफ्रेश दी सेशन, तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको. ये लीजिए मैंने भेजी आपको ना, the chat also I have sent to you, so you can go through that also. और नितिका मेरे सेशन मंडे को है, वो पूछ सकते हो. अभी आपके पास दिव्य कोई डाउट है तो दिव्य सोम इज हियर फॉर यू गाइस, तो मतलब पूछ सकते हो अगर कोई भी डाउट है, बच्चा है कोई डाउट. So there is a doubt. Can we use display to print and use dot operator to access it? Yeah, you can use your display function. You can use any function defined in the parent class or the derived class, and you can access it. And any object of derived class, it can access all the values of parent class.
how can we access values from variable of base class and derived class? Okay, so I'll just bring in the chat. Okay, the question is how can we access values from variable of base class to derived class? Okay, the way you do that is you just use this operator inside your derived class, and this operator is going to hold the reference to all the values even in the base class, and you can change that from your derived class. Okay, so there are pattern वाला एक assignment था. Guys, do that assignment हो जाए तो आपसे है ना. We have a deadline till tomorrow. deadline दे देते हैं. ठीक है. We will share all the details in the in your respective WhatsApp and Telegram group. ठीक है. Let's hope कि परसों तक कल तक वीडियो आ जाए पैटर्न वाली की. We have made the video. We have not released yet. कि आप खुद एक बार ट्राई कर लो. एक बार ट्राई करो. अगर जितना भी होता है उसको अपडेट करो. Then we upload the video for that. ठीक है. और कुछ क्वेश्चन Yeah, exactly. Even from base class, you can access everything. Like even in main function, base class object dot any value of derived class, you can access it by dot operator or even through this operator inside the class. Any doubts regarding inheritance? Okay, someone was asking what type of inheritance. This is, simple inheritance. There are other inheritances like multi-level, multiple, and all of that are done in C++. Assignment submitted already. Okay, cool. GitHub has been updated. Okay, Avnit, GitHub has been updated today. I think we need to end the stream now, guys. So let's end the stream over here only. And if you have any doubt, to ping us on WhatsApp, Telegram, or comment on the YouTube if you have any doubt. We will surely help you out in any case. Okay. So bye here till tomorrow, and tomorrow will again. Guys, one more thing. We need to conduct a master class. मतलब 2 घंटे की क्लास चाहिए. We need to take 2 hour class जिससे एक अच्छा खासा सा प्रोजेक्ट चालू करना. We need to start a project. Dates in your group, dates and timings in your group जिसपे हम start कर सकते हैं. ठीक है. Okay, Satvika, Minimum one 2 second. hours There was we one want. good question. Someone is asking why do we have to use this operator instead of dot operator for accessing? Who asked it? Umang. Umang, basically, those name of the objects, we use object name dot value to use it, right? But these object names are not defined inside class. They are defined inside main. So उस चीज को to access it inside the class, we use this. Because class के अंदर ये नहीं बोल सकते dog dot name is equal to. We have to use this. Because it is defined inside main, तो वो एक undefined variable वाली error आएगी. So that is why we use this operator. Okay, I guess that's all the questions we had. We can end the stream. Thank you, guys. Thank you, everyone.